a tasty feature, right? You would like that ice cream to be of a tasty flavor. Then what is the augmented product? That how will you be able to distinguish that the ice cream is a dairy ice cream, or is it a condensed, is it a frozen dessert? Because many ice creams, as you would, I'm not taking the name right now because I'm explaining to you the product. There are some ice creams that are marketed as dairy ice cream, some that are marketed as frozen dessert. So what is the augmented product? And then we have the potential product. That is, for example, what are the transformations? So for example, since a lot of people are suffering from diabetes, so there could be many ice cream producing firms that are now giving you a sugar-free ice creams also. Throughout this explanation, while which I just explained in these last 2 minutes, from the core benefit till the potential product, I have not taken the name of any ice cream, right? I'm just talking generally about the ice cream. So that is why these levels, the core benefit, the generic level, the expected level, the augmented level, and the potential level, they are all concerned with the product itself. Okay? Any questions? Okay. Moving forward with a specific example, okay? It is, let me tell you, just a moment, please. I'm sorry for that. As you can see from my background, I'm in my university right now. So this training session is going on from the premises of the university. So I'm sorry for this administrative in. As I was telling you that the screen that is in front of you is giving you the example of a cola drink. So the core benefit is to quench the thirst, right? The next level is that it tastes of vanilla, it's carbonated, it's sweet, fizzy drink, and it is available at cold temperature. It tastes great, and it is also available with 0 calories. Even this picture which is in front of you is not making you, identify what particular cola drink am I talking about. Am I talking about Coke? Am I talking about Pepsi? Am I talking about any other cola drink? You cannot know that, because maybe all these things would be present in Coke, Pepsi, and any other cola drink also. Although we have defined what the different levels of a product are, but since we are unable to identify which level of, which particular brand we are talking about, we cannot be specific when we are talking at a product level. Yes, if I tell you that over here, I'm particularly talking about the brand Coke itself, then we will be changing this whole diagram and converting this information into brand. For example, somewhere over here, I would be writing the brand name Coke. Somewhere over here, I will be telling you that the specific shape of the Coca-Cola bottle itself, which is patented, leads lends identity to the Coca-Cola, so it becomes a brand element itself. So in a nutshell, what I'm trying to explain to you over here is that brand elements convert a product into a brand. So the first thing that you have to understand in the primary branding structure is that you cannot convert a product into a brand if you have not thought about the different branding elements that will be used to identify and define the brand. Students, am I
I'm calling you students by habit, out of habit. I'm sorry for that. But my dear audience, is this difference clear to you? You can put on your Yes, ma'am. mics to answer. Okay. John Elia, I'm seeing your name for the first time. Can you kindly briefly explain what you have understood? And I would really like if you can put on your camera also. Uh, Assalamu alaikum. I Walaikum actually assalam. just joined few minutes ago, and what I got in those few minutes was that if we are going for a product, Mhm. then we should first think that what we are going to offer, what difference we are going to make. So if we have those kind of points that we can hit on, for example, Hmm. the pain points of the customers, Hmm. then you have to make brand from those points that you are addressing for the customer. So till now, I've just understood this thing. Okay. John, the use of this word pain points makes me assume that you have some knowledge about customer experience, marketing, and consumer behavior. I'm noting down the phrase that you have used because somewhere later in this presentation also I will be building upon the concept of pain points. Okay? Okay, now let me move forward from here. This is just, John, this could be for your revision, and for all others, it could just be a recap that while a product is available in the market, which can be bought as maybe Vakas or Amar said, but a brand has certain dimensions which help us in differentiating it with all the competing brands that are available in the market. And just like a product is used to satisfy a customer need, the brands help us in identifying a particular offering, a specific offering that is available in the market that is best suited to fulfill our needs. Now, when we convert a product into a brand, we are actually making the customer know about some radical differences between our brand and all those that are available in the market. And those differences can be very tangible, such as the features that we are offering, the benefits that we are offering. For example, अगर आप mobile phone खरीद रहे हैं, so what are the features in that particular brand of mobile phone that you are buying? For example, what is the battery time? What is the how many? What is the memory? And all these features will make a brand stand out from other brands. Okay. Similarly, what operating software you are going to go for, that also determines the choice of the particular brand of mobile phone from the category of the mobile phones that are available in the market. However, the beauty of the brand is that not all of these differences are tangible. In fact, a very large number of what differentiates one brand from another brand are purely based on emotional and symbolic associations that marketeers create with their brands. Okay? For example, over here, um, this is my Samsung phone, right? And for me, Samsung is highly user friendly. But over here, as you can see, I hope you're able to see on the slide, I have an Apple phone also. It is interesting to note that you people would be, you as my audience, would be stereotyping the owners of Samsung differently, and you people will be stereotyping the owners and users of Apple differently. What gives you this perception about a person who is using Samsung or a person who is using Apple? This stereotyping is based on the associations which Apple and Samsung have created in the minds of the people about their specific brands, and you as a customer are able to reflect them
on your own personality and on the personality of the person who is using this brand. Tell me one thing, Apple Samsung को छोड़ते हैं, हम एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं. Have you ever consumed the drink Mountain Dew? Yes, ma'am. Hmm? Yes. Yes, कौन कह रहा है? मुझे किसी की शक्ल John नहीं Ellie. नजर आ रही है. John Ellie. Why don't you people keep your cameras on throughout this session, Waqas? If you are Because there, please put on your camera, and Ammar also. ठीक है. अच्छा, जॉन एलिया, आपने कहा कि you have consumed Mountain Dew. Waqas, have you? Mountain Dew. Yes, ma'am. ठीक है. Mountain Dew. What is your idea कि Mountain Dew को जो consume करेगा वो उसकी personality किस तरह की होगी? Can you describe that type of a personality? a horror kind of person, a thrilling kind of a person who is into Thrilling. sports. थ्रिलिंग, स्पोर्ट्स, वेरी गुड. बहुत एक्यूरेट अल्फाज आपने यूज किए हैं. थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस. और इसके अलावा Person who do you loves think taking risk. loves taking risks? Okay. Do you think girls will be more interested in consuming it or boys will be more interested in consuming it? Boys specifically. Boys. Okay. Do you think that um, boys who are aged from 18 to 25 will be interested in consuming it, or elderly men, let's suppose 35 to 45, would be interested in consuming it? The 18 to 25 ठीक है. one. तो आपके जवाब से अगर मैं एक प्रोफाइल बनाना शुरू करूं तो मुझे ये पता चलता है कि जो माउंटेन ड्यू का कंज्यूमर होगा, generally that person will, a typical consumer would be a young male who would love adventures. He would be a thrill seeker. Anything else? कोई और चीज? Who's into outdoor activities आउटडोर like एक्टिविटीज. वेरी safari गुड. and बिल्कुल. mountains. ठीक है. अब जॉन एलिया, आप मुझे ये बताइए, इतने एक्यूरेट जवाब आपने कैसे दे दिए वैसे हैं? तुक्के कोई ना कोई तुक्के तो. ये जवाब आपने इसलिए दिए क्योंकि माउंटेन ड्यू ने जितनी भी अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज marketing. की हैं, they were successful enough in registering this type of a personality in a consumer like you, right? Okay. उनकी, अगर आप माउंटेन ड्यू के एड्स रिकॉल करें, उसमें आउटडोर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स दिखाते हैं ना. जी. The use of those themes, the use of those contexts, the use of those, you can say, chilling and thrilling sports, वो हमारे जहनों में हमको याद रह गया. हम, it got imprinted in our minds. So we tend to think that since Mountain Dew is reflecting adventure, it is reflecting thrill, it is reflecting this love for outdoor extreme sports through its ads. So a person who would be consuming Mountain Dew would also be a adventure loving person. The consumer would also be a thrill seeker. The consumer would also be into outdoor extreme sports, right? तो हमने क्या किया, हमने ये बात अभी कही थी कि the brand is depending upon not only the tangible difference but upon the symbolic and emotional associations the marketeers are creating in the minds of the Consumers and customers. customers. ठीक है. So many a times brand becomes much larger in terms of the symbolic and the emotional messages that it is given. अब ये अगर माउंटेन ड्यू का एग्जांपल आपको समझ में आ गया, तो एप्पल और सैमसंग के यूजर्स की पर्सनालिटी के डिफरेंस को भी आप लोग असेस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं. इसी तरह बाटा और सर्विस के यूजर्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इसी तरह फॉर एग्जांपल हश पपीज और एडिडास और नाइकी के शूज परचेज करने वाले कस्टमर्स में आप
differentiate कर सकते हैं. Why? Because you have some idea about the symbolic associations that these brands have been successful in creating. Now, coming to one comment that I originally made, that was, we live our lives through brands, we speak in the language of brands. What we are uh, portraying ourselves depends a lot upon the brands that we are using. You might be dressed up very casually when you are within your home and you're not expecting any guests, any visitors. But if you are going out, for example, uh, on a formal dinner, you would like to dress up in that manner, right? You would be wearing proper shoes. Maybe the brand would be noticeable. The brand of the attire that you are wearing might be noticeable. If you're carrying a mobile phone, you are giving others an impression about yourself through the mobile phone that you are carrying. You are giving an impression about yourself to others through, for example, the watch that you are wearing. Unfortunately or fortunately, since we are living in a world of brands, this is how our minds are conditioned, that we tend to, think of the brand's personality and its consumers' personality in overlapping terms. And if we want to project ourselves in terms of the personality that is promised by a brand, then we actively become the consumers of that brand because of the symbolic and the emotional and the intangible benefits the brand is telling us about itself. Am I clear? Yes, ma'am. Any questions? Yes, ma'am. I do have a question. Yes, please. जैसे कि एक ब्रांड है जैसे एप्पल, अब ये लोग अपनी मार्केटिंग बहुत ज्यादा कम करते हैं, ठीक है, इन लोगों की रीच वैसे ही ज्यादा है, तो अब इस कंपनी का और एक जो लोकल ब्रांड है, तो वो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. अब एक लोकल ने अपनी अवेयरनेस स्टार्ट करनी है, मार्केट में लेके आना है, तो अब ये जो इंटेंजिबल डिफरेंसेस हैं, जाहिर बात है एप्पल को तो बहुत कम चाहिए क्योंकि उनकी अवेयरनेस और उनका लेवल ज्यादा है. जो एक नया ब्रांड आएगा उससे बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो आप कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन किस तरह करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को कितना वो इंटेंजिबल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उस उन्हीं बेसिस पे हमने मार्केटिंग और बाकी डिसीजंस लेने होते हैं. Okay. John Elliott, it's a very practical question. And for that, you do have some specific calculations. For example, first thing that you have to see is that are you going to benchmark yourself with, for example, if a new brand is coming in Pakistan, whether it would like to benchmark itself with Apple or with some other brand, because that would determine whether it's coming in direct competition with Apple or is it targeting a different customer segment. So first of all, you have to identify which type of customer segment your mobile phone brand is going to target. अगर आपकी customer segment वही है जो Apple का है, so you have a very uphill task in creating a brand awareness and a brand symbolism which is as strong as Apple, because Apple has been in the industry for decades and your brand will be a new entrant. So it will be a time consuming task to make your brand stand in competition to Apple. So your marketing budget will depend upon two, three factors. The first factor is that which type of consumer market segment you are going to target, what are its media habits, what type of media is going to gain you the exposure towards the right market segment, then what type of different associations can you build on your product which will help in migration of customers from one brand to another brand. So if you are ambitious enough to fight Apple, then your resources have to be large as well. It will depend, it will that those resources will be a function of how much share you want to gain in the market. उसके आपको numerical objective
कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं कि उस कस्टमर सेगमेंट को किस तरह का मीडिया अपील करता है। फॉर एग्जांपल, इज इट ऑन सोशल मीडिया मोर और इज इट on the move? So where would you like to place your product where it can be seen, where the different brand elements can be registered in the minds of the consumers? Based on the media and the frequency with which you want your brand to be exposed to your targeted audience, you will be creating a budget for that. Plus, you will be having a budget for brand tracking and brand audit so that you know that your marketing efforts are going in the right direction, Okay. right? I do have one more question. Yes, If sure. how would you jot down those steps when we are when we are launching a brand? For example, I'm starting a brand of Hmm. socks for boys or for men. Hmm. So to begin with, are there any kind of tools or this kind of data that we have to collect to start working on it, that we, for example, I have just found the product, I'm about to launch it, now I have to make the ads for it or market, I have to do the marketing for it. What Hmm. things would I need to jot them down to find my exact target audience? Is it by looking at the competitors or by what data or by what tools? Okay. John, tell me something. Is it a real example that you are giving, or is it a hypothetical example that you are giving? It is a hypothetical इट्स अ example. I हाइपोथेटिकल Yes. एग्जांपल, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर आप वाकई सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे ना, तो ये जो सवालात आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले आपने आंसर कर लिए होंगे किसी ना किसी तरह से। फॉर एग्जांपल, यू शुड नो द overall size of the market for socks, how many brands are there, what their market share is. Then, as you use the word pain points, what are the pain points in the socks that are already available, branded socks that are already available in the market? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको Price. अपना एग्जाम्पल दूं, प्राइस भी हो सकता है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, तो देयर वुड बी मेनी पीपल लाइक मी हु सफर फ्रॉम आर्थराइटिस, right? So it becomes really painful for us to find the right type of uh, padding within the shoes and the socks, which makes wearing closed shoes in winters more comfortable for us. So, for example, if you have identified that there's a pain point for customers like us, that we don't have a suitable product for us in the market, then you would identify how many people like me exist in the market, what type of features we would like to be present in your brands, what price we would be willing to pay for your brand, which is specifically designed to address our pain points. And then, if you are able, will you be able to sell that brand at a price which is acceptable to us? Will you be having costs? Will you be able to achieve production, marketing, and distribution at a cost which still gives you margin by selling that brand to us at a price which is acceptable to us? Once you have answers to all these questions, then you will be actually going towards production. Once you have created the value offering, then comes how will you make that brand stand. Now comes the strategy of branding. अभी तक जो हमने बात की वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि हम उसको स्ट्रेंथ कैसे दें, हम उसकी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करें। हम आप जैसे मार्केटियर्स जो हैं, मुझ जैसे कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि योर ब्रांड इज द बेस्ट एंड इट मीट्स ऑल आवर needs as well. So now your marketing efforts will be directed towards registering the new brand in our minds, and that would be done by through brand positioning. If there is no other sock brand which is able to take care of our needs, you have a very big blue ocean in front of you where you can untap a whole virgin market. But for that, you need to place your product in the right position in my mind, that yes, I have to go for your brand. So you have to direct your marketing efforts at making your brand more prominent, making your brand more recallable, making your brand more authentic. That will be the
objective of your marketing strategy once you have developed the product and you want to capture the market share. Have I answered your question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it. Any So what I've got is that you need to have a solid marketing budget for it if you are going for anything for देखिए, marketing. what do you mean by solid marketing budget? सॉलिड मार्केटिंग बजट मींस कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, पर्सोना अपना बना नहीं ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल नहीं मैंने नहीं। अपनी प्रोडक्ट बना ली है। अब हम्म, मैं जब तक एड्स या मार्केटिंग नहीं लगाऊंगा तो मैं तो बैठा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई चल के नहीं आएगा, मुझे खुद जाना होगा। और जो आप जिस तरह बता रही हैं अवेयरनेस और वो चीजें क्रिएट करनी है, उस पर तो बहुत ज्यादा बजट लगेगा ही लगेगा, तो उसमें तो नहीं जरूरी नहीं है। देखें, द ब्यूटी of creating a new brand in today's times is that your marketing, you need to have a solid marketing strategy rather than a solid marketing budget. इस चीज को नोट कर लें। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी सॉलिड होनी चाहिए। आजकल पाकिस्तान में अगर आप गूगल करें कि कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम for startups. So many startups have come up in Pakistan in the last 3 years, and the reason is that they are they have a brilliant value innovation idea, and they are able to develop and market that at a very low cost. ये जो मैंने I don't know whether you were in the session or not, जब मैं आपको कुकी इस ऑडियंस को कुकी क्रम्बल का एग्जांपल दे रही थी। It's Cookie Crumble is a venture of an IBA graduate, not even an IBA graduate. She is an IBA student. She is in her third semester right now, and she has already been in this business since she was in A levels, and she is doing it from her home. And she has a huge following in Karachi, huge in the sense that if you compare the number of months that she has been in business versus the number of followers and the likes she already has and the number of orders she has. Abhi Karachi mein Karachi Eid Festival hua tha 2022 mein, and she was I mean she was overwhelmed the um, with the orders that she was मींस getting, रिस्पॉन्स। and she does not have any professional help at home. She does not advertise on any other media. She just has an Instagram profile where her loyal customers are posing pictures. तो अगर loyal customers आपके Instagram पर आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका तो मार्केटिंग में कुछ भी खर्चा नहीं आ रहा है। मैम ये तो 100 में से एक बंदे की मिसाल होगी ऐसे। नहीं नहीं, 100 में से एक बंदे की मिसाल मैंने आपको इसलिए दी, जैसे मैंने अभी कहा, देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स, successful startups in Pakistan that emerged on the horizon of Pakistan within the last 3 years, and they are challenging this conventional wisdom that you require a huge outlay, a huge cash outlay in making your brand successful. In today's time, when we are able to cut down costs thanks to digital technology, thanks to social media, it becomes quite easy, quite manageable to launch a successful brand. Plus, your branding and marketing strategy is extremely flexible because of this harnessing of the new technology. So, by all means, if you really want to convert this hypothetical example into a real example, I would really advise to go for you, and I promise you that I will be your first customer. ओके मैम, ऑलराइट। ठीक है? Okay. Moving forward, I have exactly 1 hour left, and let's see what other things, what are the next steps in, excuse me, in building up a brand. So let me the slide that I'm changing in front of you, it is just a formal definition of what the brand is, and the definition is obviously taken from the American Marketing Association, and it is this is a name, a term, a sign, as we have discussed already, to identify and differentiate from the rest of the competitors within the same product category. Moving forward, yes, we were just going to review what are the benefits of branding.
So if your brand becomes well established, then it helps the customer in taking a very quick decision about what that customer wants to buy. So it results in efficiency of time, it results in less effort in making the decision, and it reduces the search cost also because the consumer will just go and pick up the desired brand from the shelves, right? And as is written on the screen, I've explained it also earlier that we usually speak in the language of brands. We project ourselves through the brands. In consumer culture, this is known as conspicuous consumption. It is known as something which you are using to, without the use of language, you are identifying and introducing yourselves to others through the brands that you are using. Similarly, for let's move towards what मैम why एक क्वेश्चन, brands. जी जी sure. ये जो आप कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन आप बता रही थी, जो कि मैं टर्म में मैं उसकी समझ गया हूँ है क्या चीज वो, इसकी कोई स्टैट्स प्रूवन होते हैं कि कितने परसेंट ऑफ कस्टमर्स ऐसे करते हैं? क्योंकि मैं खुद तो ऐसे नहीं करता, तो मुझे उस पे वो नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल इसके ऊपर स्टैट्स हैं। और अगर मैं अभी आपके साथ गूगल की स्क्रीन शेयर करूं कि कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, आपको ये कंज्यूमर कल्चर ये बताएगा कि यू are a part of consumer culture if you are going for conspicuous consumption. There are many people like you, people like me, who defy this power, and we like to make we like to live and lead simple lives. So but we are in a minority, and at times even the consumer culture will not count us as a part of its own. um, I have not introduced myself to you people, लेकिन अभी मैं आपको अपनी PhD dissertation का एक example देती हूँ since this thing came up. My own PhD dissertation is about the essentiality of non-essential purchases for bottom of the pyramid customers in a digitalized world. In simple words, it means that the lowest economic segment within Pakistan, why is it purchasing smartphones and how is it affecting its consumer behavior? And I was enlightened and I was surprised to learn through this dissertation that people belonging to that segment where usually it's very difficult to make ends meet, where it's very difficult to buy two decent meals in a day, people are still, saving up money to buy technical products like smartphones because they want to avoid the social exclusion which they face because of their poverty, and they want to become a part of the aspirational groups whom they admire. And in today's world, when we are able to create a different identity on the virtual world as compared to the physical world, these technological gadgets are actually helping these people in bridging the social divide. And they are doing this by conspicuous consumption. Nobody would know what you have eaten at home, but they would know what phone you are carrying. I'm sorry, but this is how consumer culture works. There were some positive findings also, which are giving me leeway for the postdoctorate. But for the time being, as you asked, that there would be, you don't indulge in conspicuous consumption, there would be many people like you, but people like you and me would be in a minority. And since we are in a minority, that is why the brands are thriving. Okay, I got it. ठीक है, ब्रांड्स तो And सक्सेसफुल होते ही ना अगर आप जैसे लोग जो हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, ब्रांड्स का तो तो आप, बिजनेस ठप होके रह जाता। मैं एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ रहा हूँ वैसे अपने ऑन पे, तो मैं इनपुट एक देना चाह रहा था कि इस आपकी रिसर्च में ये जरूर शायद फाइंडिंग हो कि जैसे जैसे वो डिजिटल अवेयरनेस बढ़ी है और ये एड्स ज्यादा बढ़े हुए हैं, लोगों के हाथ में ज्यादा आ रहा है, तो जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी इस तरह एक दो परचेजेस कर ली थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वो मुल्तानी सोन हलवा है, उसका मैंने ऐड देख लिया जबरदस्त, क्या फेसबुक याद पे। दिला दिया आपने। वैसे भी अच्छा, 12 बज रहे हैं क्या इस वक्त, ये बड़ा इनअप्रोप्रिएट एग्जांपल है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो, अब मैं नहीं करता कोई भी चीजें इस तरह की फजूल कोई चीजें, लेकिन वो मैंने कर लिया। अब मैं दो तीन दफा परचेजेस कर चुका हूँ उसकी। अब वो सारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो मैंने फेसबुक से ऐड देखा, वो ऐड देख लिया, बस वहां पे क्लिक कर दिया,
और फिर हम शायद आप ये इस चीज को अपने पास शायद आपके लिए हेल्पफुल हो कि ना हो। जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन वो ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान में नई चीजें आ रही हैं, ये ऑनलाइन परचेजिंग और ये ऑनलाइन पे जाना, तो इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग होता है बंदे के लिए वो कि यार चलो देखते हैं क्या चीज आती है। तो उसमें भी काफी लोग जो ट्राई करते रहते हैं। अब आबादी का इतना बड़ा सेगमेंट, आप सैंपल साइज इतना बड़ा लें, तो अगर वो एक एक बार भी ट्राई करे तो जो ब्रांड है उसकी काफी ज्यादा सेल हो जाती है। तो बिल्कुल। ये मेरी एक अपनी आपकी रीडिंग थी। बिल्कुल रीडिंग, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। बल्कि जॉन एलिया, व्हाइल यू आर टेलिंग मी ऑल दिस, पता है मैं क्या सोच रही हूँ? अभी तो हमारा सेशन जो है ये ब्रांडिंग फ्रेमवर्क का है ना, लेकिन अगर आप लोगों ने शॉपिंग थेरेपी का नाम सुना है, शॉपटेनमेंट का नाम सुना है? शॉपटेनमेंट मीन्स दैट यू आर कंबाइनिंग शॉपिंग विद एंटरटेनमेंट, एंड शॉपिंग थेरेपी मीन्स दैट you are you are treating shopping as a therapy for हीलिंग your depression, for your moods, for और ये many हीलिंग। things, right? तो ये शॉपटेनमेंट और शॉप थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है ये आया ही ब्रांडिंग के बाद है। अगर अच्छा। ब्रांड्स ना होती तो ब्रांड मतलब nobody would have appreciated the power of brands in making you happy, in increasing your subjective well-being, satisfaction, happiness. I don't एग्जैक्टली। know how short term or long term that would be. Short term ही होता होगा, that is why हम बार बार शॉपिंग के लिए जाते हैं, छोटी से छोटी चीज भी खरीदते हैं तो we feel an uplift in our moods, ठीक है? And we like अभी जो हमारी सोशल लाइफ है वो इतनी ओपन हो गई है because of the social media, that we like to tell others about the purchases that we have made. So और मैम इसमें डिजिटल पावर जो है वो सारा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आपने एक चीज ली है, आपने अपलोड कर दी, लुक व्हाट आई बॉट, व्हाट आई परचेज, हैशटैग exactly, दिस, हैशटैग दैट। और आपका yes, एक्सपोजर जब बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, आपकी रीच लोगों तक ज्यादा बढ़ रही है, तो आप और उसमें इंडल्ज कर रहे हैं बिल्कुल। शायद। तो जॉन एलिया, आपके इन सारे कमेंट्स को वापस मैं चैनलाइज कर रही हूँ आज के सेशन की तरफ। द पावर ऑफ द ब्रांड lies in the mind of the customers, and how is that created? The marketeers use all these channels, digital marketing हो गई, social marketing हो गई, electronic marketing हो गई, ठीक है? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आउट ऑफ होम मीडिया ये तो साथ साथ चल ही रहे हैं, लेकिन इतने नए मीडियम्स आ गए हैं अब मार्केटिंग के marketeers are engaging those media at a cost effective level, and they are really imprinting their brands in consumer minds, ठीक है? तो firms के लिए क्या है? Obviously it gives them a steady stream of revenues, because once you become engaged with a brand, you become a loyal customer, so that loyalty does translate into a lifetime customer value, ठीक है? आगे हम चलते हैं। Retailers के लिए भी many a times retailers are projecting their own image as a retailer by keeping the specific brands that are available over there. मिसाल के तौर पर अगर हम इम्तियाज की बात करें, आई थिंक ऑल ऑफ यू, कराची के बाद मैं कराची से आप लोगों को एड्रेस कर रही हूँ, बट जो मेरे पास कंज्यूमर ऑडियंस प्रोफाइल था उसमें पीपल बिलोंग टू इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरावाला, गुजरात एंड अदर cities also, और मेरा ख्याल है कि इन सब जगहों पे इम्तियाज खुल गया है। So the brands that इम्तियाज carries, फिर कराची में जैसे नाहिद सुपर स्टोर है, the brand that Nahid carries, they identify the image of the retailer like Nahid and the image of retailer like Imtiaz itself. So people would know where they would like to go if they want to purchase a specific brand itself. Okay? Moving forward, a very important questions comes up, that what can be branded? Products and services को तो हम brand करते ही हैं, इसके अलावा personalities are branded, places are branded, destination tourism इसीलिए आजकल बहुत क्या कहना चाहिए, gain कर रहा है importance, because we are able to brand and market those destinations for tourism. फिर मैंने जैसे अभी आपके सामने कराची ईद का जिक्र किया, it's an event, even that is being branded and marketed. Sports already मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि they are being branded and marketed, and even ideas, even social campaigns are being branded and marketed. So I think it would be very difficult to think up of a product
or category, or for that matter, any existing category which cannot be branded. This is Branded. the power of the brands right now. Okay? Do you people agree or disagree? No, I just want to make sure that we basically agree that there is nothing on this world in this world that cannot be branded. That cannot be branded. Yes, that's very true. Okay? Okay. uh, Ammar, Farhan, are you people working somewhere? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Where are you working? Farhan, where are you working? Ma'am, basically, I'm freelancer. You are a I have freelancer. done, yes, I have done Okay, bachelor electrical engineering. After that, very I good. switched my skills to freelancing. Very good, very good. And Ammar, Yes. are you, don't tell me the name of the company, but I'm just asking, are you working somewhere? Yes, I'm in a semi-government corporation for telecom. I've done telecom engineering. Okay, fine. Now I think you can play the game guess the brand. Okay, you are in a telecom company. Don't tell us the name of the company itself without telling the name. Can you tell us something about the company which will help us in guessing the company in which you are working? Without telling the name. Yeah, we will be answering you. We'll be telling you the name. You have to tell us anything apart from the name which will help us in identifying the company that you're working for. All right. I cannot exactly tell you, but I can make you be near that company. If I say hello to the future, does that ring any bells in your minds? फरहान कुछ याद आ रहा है? Hello to the future. PTCL. PDCL. Well, PDCL is our sister company because it has the same services, internet telephony, and I work in National Telecom Corporation, and that it has the same service as PDCL, but we just provide service to the government and ministries. So we have a specific target and specific mandate to provide those services, but services are the same as PDCL. So branding is by PDCL. Very good. अम्मार और फरहान कॉन्ग्रेचुलेशंस. अम्मार आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए कर रही हूँ कि आपने इतना स्पेसिफिक क्लू दिया, और फरहान को इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि उन्होंने इस क्लू को फौरन पिक करके आपकी ब्रांड को 80% गैस कर लिया. ठीक है ना? ठीक है. तो व्हाट व्हेन ये छोटा सा गेम था हमारे पास, एक ही ब्रांड को हमने किया बिकॉज वी हैव अदर टॉपिक्स टू come up with, but what are the lessons that this short half a minute game told us? If you can see the slide. It's slogan. Slogan, It's what does slogan. it tell you? What can the product do for you? Hello for the future. It's such a powerful tagline. Hello to the future. What does it say? What does it mean? What It's idea do mean you about, get? yes, it's about telecommunication, like we talk with others. So it is basically telecom company Exactly. because it But is ये asking about future. वेरी गुड, एक्सेलेंट. अगर ये आप दूसरा पॉइंट पढ़ें जो मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने जिक्र किया है मेंटल स्ट्रक्चर्स का, which means that some mental associations are created by the marketeer which help the consumer in organizing their knowledge about products and services. So अगर अमार की कंपनी ने अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटजी को अच्छी तरह जेलन किया हुआ है, then people like Farhan would be able to associate that particular tagline with the particular company that is forwarding that tagline, and that knowledge will be organized in the mind of consumers like Farhan. When they are thinking about different telecom companies, they will be making their ideas about those telecom companies based on the organized knowledge they have in their minds. अगर brand identity ना हो, अगर हर टेलीकॉम कंपनी सिर्फ टेलीकॉम कंपनी के नाम से अपने आप को मार्केट कर रही हो, it will become very difficult for us to organize information pertaining to a distinct company because we don't have any identification for that.
we will not be able to organize that information in our minds. We will not be able to recall that information while we are trying to take a decision about which telecom company's service do we want to avail. Okay? Moving forward, we are coming to a very important point जिसका जॉन एलिया ने जिक्र किया था कि how do we quantify, for example, what do we need to invest in in brand building, and whether that investment is actually paying off or not. So we have to understand the role of, we have to understand what we mean by brand knowledge and how does it help in creating brand equity. पहले भी मैंने आपसे कहा था कि don't be boggled by these names, we will be explaining them in a little while. So first, let me tell you what brand knowledge is. So brand knowledge is, like we just said, what organized information do you have about the brand itself? And the more knowledge that you have about a particular brand, the more powerful the brand actually becomes. So coming to brand equity, let me explain it through an example first. That, for example, uh, John Elia is going to launch a new brand of socks, and he has devised a marketing strategy for that. And based on that marketing strategy, uh, he has measured what is the response that is coming from the consumers. So the first equation on this slide is showing you, first figure on the slide is showing you that the marketing effort which is done by John Area is resulting in some sort of consumer response in consumers like me. So let me call that effect E1. Okay? For example, consumer response could be that I have purchased that brand because John Elia started marketing that on social media. Okay? I came across the campaign on social media and I bought that pair of brand. Now, my response, which is dependent upon marketing effort, it has created this consumer response is labeled by E1 in the equation over here. Okay? Now, if I already possess some brand knowledge, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि जॉन एलिया वो सॉक्स जो हैं वो किस नाम से मार्केट करेंगे, लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि वो सॉक्स किस नाम से मार्केट होंगे, उनका ब्रांड नेम क्या होगा, ठीक है, उनकी ब्रांड आइडेंटिटी किन एलिमेंट से क्रिएट होगी, और फिर मैं कोई कैंपेन देखती हूँ उस ब्रांड की, तो मेरा रिस्पॉन्स ज्यादा magnified हो जाएगा as compared to my previous response. What magnified or what amplified this response? The brand knowledge that I possessed, for example, by knowing the brand itself, the brand logo, the brand quality, all that helped me in having a more solid, more magnified, more amplified response towards the marketing efforts that John Elia would be doing. I am labeling that by E2. So what does brand equity actually is? It is the difference between my response to marketing effort in the absence of brand knowledge and my response to marketing effort in the presence of brand knowledge. My dear audience, बहुत ज़्यादा heavy तो नहीं हो गई ये slide? Amar, Farhan, Elia, you people have मैम become very silent. एग्जाम्पल Yes, थोड़ी ma'am. सी I अगर होगी understand. तो एग्जाम्पल मैं देती हूँ, लेकिन ये चीज समझ में आ गई. एग्जाम्पल तो मैंने जॉन एलिया आपके सॉक्स की अवेटेड ब्रांड का ही दिया है कि if I don't know the name under which you will be marketing those socks, I don't know the identity, I just came across your ad on social media and I felt that I should try this because it's something new in the market, right? So my response in form of buying towards the campaign that you put up on social media, I'm labeling that by effect 1, E1. ठीक है? E1, ठीक है?
But now, yes, your mic is mute. I didn't hear your comment. मतलब E1 वो अवेयरनेस वाली स्टेज है फनल की और उस पे Supposedly, आप supposedly, ठीक ठीक है. अब आपने क्या किया कि मुझे आपने आउटडोर एडवर्टाइजिंग की. मुझे पता चला कि भाई मार्केट में इस ब्रांड के नाम से ये सॉक्स आ रहे हैं जो आर्थराइटिस कंडीशन रखने वाले पेशेंट्स के लिए बहुत कंफर्टेबल हैं, एंड द प्राइस इज दिस, एंड फॉर एग्जांपल the durability is this and the availability is in such and such stores. This information is the brand knowledge that I have already uh, I've been exposed to, कंज्यूम्ड and और that यूटिलाइज्ड is in my mind. Now, after the presence of this brand knowledge, if you start an advertising campaign, that campaign is going to have a more defined effect on me as a consumer, because now I know which brand you are marketing. Now I know which brand you are highlighting, which benefit, what is the brand whose benefits you are telling me through your ads. So now my response will be more enhanced, it will be more magnified. Maybe I would be buying more. Maybe my response would be in the shape of creating more word of mouth, more attracting more customers towards your brand. That would be one of the consumer responses that will come to light if I have brand knowledge and you are now marketing your brand. Am I clear? यस मैम ठीक है? Yes. Okay. Ma'am, can I contribute something here? Yes, please do. I remember from your example that when Garana is a real estate company, Yes. started its advertising, it simply put a logo on billboards with a bird and like a round logo. Yes. Then it repeated its billboards and advertising without any name, without any, just an logo and icon. Then it came a few days later, then it revealed its marketing strategies. So that brand knowledge is related to that icon that people saw, and they thought, what is this? What is coming up? Then they revealed its strategies. So that contributed to some brand equity that you were talking about. I think it can relate to that. Yes, you can relate to that. And the example that you have given is of a teaser ad. ठीक है, इसको teaser इसलिए कहते हैं because it teases the curiosity of the consumer, of the audience, and it motivates them to keep on a lookout for more information on that similar design गेट or इनटू इट logo. Yeah, ठीक है. So you are right. Your idea is, your example is totally relatable. Okay, moving on to the components of brand knowledge. ब्रांड नॉलेज जो वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है ना हमारे जहनों में किसी ब्रांड के हवाले से, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स, द अवेयरनेस अबाउट द ब्रांड and the brand image. Brand awareness means that how can you identify the brand under different conditions. For example, uh, can you see this kiwi written on the screen in front of you? यस Have you been exposed to this brand before? यस ठीक है, अगर आप पहचान गए कि कीवी क्या है, इट मींस दैट कीवी हैज ब्रांड रिकग्निशन. ठीक है, ओके. ब्रांड रिकॉल का क्या मतलब होता है कि आई शो यू द प्रोडक्ट कैटेगरी एंड आई आस्क यू व्हिच ब्रांड्स कैन यू रिकॉल इन दैट प्रोडक्ट क्लास. फॉर एग्जांपल, कैन यू सी दिस फिगर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू? द यस प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी की के बारे में हम बात कर सकते हैं इस फिगर के देखकर? Shoe पॉलिश polish. शूज Polish, हाउस shoe polish. गोल्ड ठीक है. Okay, so if I ask you that which brands of shoe polish can you recall, what names will come to your mind? Cherry blossom, kiwi. Cherry चेरी blossom, ब्लॉसम very good. Kiwi आ जाएगी, और And और भी कोई I है? think there was a brand called Elude or something. I don't know. It was a Chinese brand. ठीक है. All right. Now the most recalled, the highest recall is of cherry blossom and of kiwi. तो brand recall का क्या मतलब होता है कि you know the product category, within that product category, without any aided help, which brands come top
of your mind. ठीक है? And brand recognition is that if you are exposed to a brand element, then can you recognize that brand? Are you familiar with that brand? ठीक है? Both the brand recognition and the brand recall make up the awareness about the brand. And मैम एक क्वेश्चन yes, please. आपको कट किया, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कीवी ब्रांड है ना, तो ये कैसे कनेक्ट हो रहा है अपनी नीच के साथ, क्योंकि कीवी तो एक परिंदा है और ये इनकी ब्रांड पॉलिश है, तो ये कनेक्ट कैसे करवा रहे होते हैं कस्टमर को जहन में, क्या इसका कोई रिलेशन होता है? मुझे लगता है ब्रांड कि नेम हाँ, मुझे लगता है कि आप सब ऑडियंस में मैं बहुत ही ज्यादा एंशियंट हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक बचपन का वो कीवी का ऐड याद है जिसमें एक क्लासरूम सेटिंग दिखाई जाती थी और उसमें वो टीचर पूछती थी बच्चों से कि प्यारे बच्चों कीवी क्या है, और बच्चे जवाब देते थे कीवी एक परिंदा है। फिर वो पूछती थी कि क्या व्हाट वाज द लिरिक दैट और कहाँ वो रहता है, तो बच्चे जवाब देते थे कि सबसे अच्छी शू पॉलिश की डिबिया पर कीवी रहता है। अभी आपने ऑफ हैंडेडली मुझसे पूछा तो मुझे इसकी एग्जैक्ट सेकंड लाइन याद नहीं आ रही थी, हालांकि वो ट्यून वगैरह मेरे जहन में। वो एड इतनी फ्रीक्वेंटली उस वक्त तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सिर्फ पीटीवी चैनल हुआ करता था, वो एड इतनी फ्रीक्वेंसी से चलता था, और उस जमाने में तो हमारे पास चॉइस ऑफ चैनल्स भी नहीं थे कि एड के वक्त हम स्विच कर दें। तो वी रिमेम्बर दैट एड फ्रॉम दैट, और इसीलिए मैंने ये दिखाया आप लोगों को कि इट्स अ लॉन्ग एस्टैब्लिश ब्रांड, ऑल्दो इट्स नॉट डूइंग एनी मार्केटिंग एफर्ट्स नाउ, लेकिन उस वक्त जो इसने ब्रांड बिल्डिंग की थी कि कीवी जैसे परिंदे को उसने शू पॉलिश के साथ एसोसिएट किया था, तो हम लोग जो उस वक्त टारगेट मार्केट थे, हम लोग क्यों उसकी उस वक्त टारगेट मार्केट थे? बिकॉज वी वर स्कूल गोइंग एट दैट टाइम, वी वर डेली कंज्यूमर्स ऑफ शू पॉलिश, so that brand got imprinted in our mind so much so कि अगर आज कोई कीवी भी कहता है तो हमें वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड या जहन में नहीं आती, हमारे जहन में सबसे पहले पॉलिश कीवी शू पॉलिश आती है। तो this is how you build association between that logo which is kiwi and the product category which is shoe polish. ठीक है? सो इसका एडवांटेज क्या है? लर्निंग एडवांटेज मैंने ऐड आपके सामने रिकॉल किया, तो लर्निंग एडवांटेज क्या था कि वी लर्न दैट कीवी इज अ शू पॉलिश। कंसिडरेशन एडवांटेजेस क्या है कि अगर इस वक्त मार्केट में चेरी ब्लॉसम भी है, कीवी भी है, और वो चाइनीज ब्रांड भी है जिसका आपको नाम नहीं याद आ रहा, सो यू विल कंसिडर बाइंग आइदर कीवी और cherry blossom rather than any other brand. I know there are more brands of shoe polishes in Pakistan, but because they're at least for consumers who are in my age group, maybe our brand recall of other brands is not as strong. So we will consider only these two brands of shoe polish when we are thinking of purchasing one. And choice advantage means that amongst all the products that are available, will I prefer kiwi or will I prefer cherry blossom? So because of that childhood association of this jingle with the shoe polish, maybe I would always prefer kiwi over cherry blossom, क्योंकि वो बचपन से एक इतनी strong association मेरे अपने जहन में kiwi shoe polish की बैठी हुई है कि it helps me in deciding which brand I want to buy. Moving on to the next element of brand knowledge, it was the brand image. Again, the unique associations, right? What are the benefits, symbolic as well as non-symbolic, that you are creating in the minds of the consumers through marketing activities, through shelf displays, through your websites, through your comments that your satisfied customers are giving you? All these create a brand image in our minds. For examples, I would consider Outfitters a young brand, and I would consider Cambridge a more mature brand in clothing. So this image is again based on the unique associations that Outfitters or Cambridge has been passing on to the consumers through its different marketing activities. ठीक है? इसी तरह ब्रांड मीनिंग का क्या मतलब होता है? हाउ does the brand perform? What is your
objective judgment about the performance of the brand and what type of brand personality you are now associating with it. So all these things, the identity of the brand meaning, it can be presented in the form of a brand pyramid. Let me move on to that slide. I'll come back to these slides later on. This is one important slide that I have to discuss with you people, because this will actually take your level of uh, branding and brand management to the next level. So basically this resonance model or this brand engagement model has been developed by a very famous brand marketer whose name is Keller. And if you search on the YouTube, you will find very recent talks about brand management on by this managed brand marketing guru. So he has stated that the power of the brand resides in the mind of the consumers, right? But in order to make that more powerful, in order to make the brand more powerful, you have to move from the bottom of this pyramid towards the top or the apex of the pyramid. Okay? Can all of you hear and see this brand pyramid in front of you? Yes, ma'am. Okay. So the base of the pyramid determines how salient, how recognizable your brand is, how strong is your brand identity. Are you able to categorize the brand within the specific product category, or is it something which you cannot associate with the product category? इस पे मुझे याद आया, while I was working with Hilal Foods, there was a campaign of the chewing gum Fresh Up, and it received a very negative backlash from the audience. And the reason was that whatever was shown in the ad, it did not uh, get this idea across to the audience that Fresh Up was a chewing gum. It was thought of something uh, which was maybe prohibited or illegal or negatively stereotyped. People not able to identify what Fresh Up was, right? So that was a major flaw at that time of that Fresh Up campaign, that despite having a very heavy budget, the objective was not achieved. The audience did not relate that the product was actually a chewing gum, and that is why a lot of negative feedback was received by the company at that time. So your salience means how well aware uh, consumers are about your brand. So you have to create deep, broad brand awareness in order for the customers to make them able to identify your brand with a basic product category. So if you are introducing a brand, John Elia, your preliminary marketing efforts will be directed towards building the brand awareness. Moving up from Ma'am, there, one question. yes. Was that Fresh Up ad the same one which involved some college students No, or I'm something talking else? about 20 years back. Okay, it might. Okay. Okay. All right. All right. Now moving on, once you have been able to establish the category within which your brand belongs, you have to define what is your brand positioning. By brand positioning, we mean that how is your brand similar to and how is it different to the existing brands. Points of parity means what is common amongst all the brands within a product category. Points of difference mean what are the factors that make your brand stand out from the other brands within the same category. So those points of parity and points of difference actually determine the meaning of the brand, in the sense that people or consumers make objective decisions, evaluations about the brand performance. For example, how are the features, what is the reliability, what is the warranty attached with the product, is it working, is it going to work
efficiently? Is it stylish? Does it have an aesthetic design? ये सारी judgments जो हैं ये objective हो जाती है, and they are termed as the performance of the brand. Whereas on the emotional side, the points of parity and points of difference create a symbolic meaning in the mind of the customers, and that is referred to as the imagery of the brand, which means that what type of typical customer comes to your mind when you think of a पर्टिकुलर ब्रांड. जैसे मैंने आउटफिटर्स का एग्जांपल दिया या कैम्ब्रिज का एग्जांपल दिया, तो कैम्ब्रिज में यू वुड लाइक typical customer would be maybe more professional and more I mean not as young as a typical customer for an outfitted clothing outlet. ठीक है. Moving forward once, okay, rather than moving forward, इस स्टेज पे जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी वो सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए नहीं होगी. आपने वो क्रिएट कर दिया है. इस स्टेज पर आपको हाईलाइट करना है कि हाउ इज योर ब्रांड डिफरेंट एंड बेटर देन अदर्स, राइट? सो यू आर गोइंग टू डिफाइन the meaning of the brand through your marketing strategies when your brand reaches the next level in this brand resonance model. Then you move on to the third level, in which you have to derive positive and accessible reactions from the responses of your customers. What do I mean by that? Okay, now comes the time when customer is going to realize the value of your brand, and based on that transaction is going to take place. So if they already know about the performance and they know about the imagery, now they will be judging the quality, and they will be considering whether a particular brand should be bought because it is superior to other in the market or not. And similarly, they think that what would be the psychological reaction if they purchase a brand? Will they feel excited? Will they feel that people are in awe of them? Would they feel that their self dignity and self empowerment is enhanced? So both the objective side and the sentimental side of brand building comes into effect when this third level of brand resonance is achieved. And because now you are gauging what positive customer response is coming towards you. Okay? If you are successful in this stage also, then your brand is going to reach the highest point of brand resonance model, which means that now your customers are developing an intensive and active loyalty with your brand, which means that they are not willing to consider any other competing brand when they think of purchasing something within the same product category. So for example, a Toyota buyer might not switch to Honda, a Honda buyer might not switch to Toyota, and similarly, for example, if you are purchasing Cambridge brand, you might not like to purchase Khadi, or maybe you will be having a very pronounced preference for the brand that has a strong, towards which you feel a very strong loyal attachment. Any questions at this stage? मैम कोई फूड से रिलेटेड जो आप इंडस्ट्री है उससे भी एग्जांपल्स दें क्लोथ्स के अलावा, क्योंकि उसमें जरा सैचुरेशन आ जाएगी. जैसे ready to eat processed foods, किस तरह के फूड्स या रेस्टोरेंट्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स. फॉर एग्जांपल हल्दी है, टर्मरिक पाउडर है, वो एक मार्केट में भी मिल रही है, दुकान वाला भी दे रहा है, एक फार्मर भी दे रहा है और एक ऑर्गेनिक वाला भी दे रहा है. जो ऑर्गेनिक वाला दे रहा है वो कैसे compete करेगा बीच में, मतलब वो क्या कैसे निकालेगा अपना कस्टमर, कैसे वो इन चीजों को टारगेट कैसे करेगा? वो चीज वो ऑलरेडी मार्केट में है. सबसे पहले तो उसको इस हल्दी को ब्रांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. हल्दी में और ब्रांड में क्या फर्क हो जाएगा? मैम जब वो ब्रांड में आ जाएगा तो वो लोगों को कैसे इमोशनली या कैसे टारगेट कर सकता है, क्योंकि वो चीज 200 रुपए की मिलती है मार्केट में, और जो इस बंदे की जो ये बंदा नया आइडिया लेकर आया है, नई चीज लेकर आया है, वो 400 की है. तो उसमें हम उसमें कस्टमर को हिट कैसे करेंगे? कोई नया, बेशक आपकी चीज अच्छी है, चीज वही है, आपने अपना जो कस्टमर है उसको, मतलब जिस तरह आप टोयोटा और होंडा में समझ आती है ना,
टोयोटा जो है वो एक ड्यूरेबल कार है, उसमें इतनी कंफर्ट नहीं है। होंडा में कंफर्ट है, इतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं है। या जो कैम्ब्रिज है वो ज्यादा फॉर्मल है, आउटफिटर्स जो है वो कैजुअल है। तो इस तरह जब हम इस तरह एग्जांपल इसलिए जानना चाह रहा हूँ ताकि अगर हम खुद कुछ लॉन्च करना चाहें तो हम उसको रिलेट कर सकें, ठीक है, इसलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। डू यू नो व्हाट तुखम बालंगा इज? ये जी बिल्कुल। क्या चीज होती है? तुख में बलंगा, जिसको हमारे पाकिस्तानी चिया सीड्स को भी तुख में बलंगा बना देते हैं। एक चिया होती है, एक तुख में बलंगा होती है। हाई इन क्या फाइबर है। फर्क होता है दोनों में? चिया है, हाई इन प्रोटीन है और मैक्सिकन है। और तुख में बलंगा हमारी लोकल है, हाई इन फाइबर है। बस यही यही फर्क है प्रोडक्ट और ब्रांड में। प्रोडक्ट तुखम बलंगा है और ब्रांड जो है वो बड़े सोफिस्टिकेटेड पैकिंग में चिया सीड्स के नाम से। और ये परसेप्शन जो आपने बताई ना, ये क्रिएटेड है कि देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन चिया सीड्स एंड तुखम बलंगा। हालांकि मेडिसिनली देयर इज नो एज सच नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। तो तुखम बलंगा जो है वो तो आपको अनब्रांडेड किसी भी स्टोर से, फॉर एग्जांपल आधा पाव लेंगे तो वो आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। लेकिन चिया सीड्स का जो फॉर एग्जांपल 200 ग्राम्स का भी जो पैकेज आ रहा है, फॉर एग्जांपल नेचुरल फूड्स ब्रांड नेम में, तो वो पैकेट आपको 450 रुपीज का मिल रहा होगा। सो व्हाट आर वी पेइंग फॉर, व्हाट आर वी पेइंग फॉर व्हेन वी आर पेइंग फॉर 450 रुपीज? हम अनब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए तो नहीं दे रहे, वी आर पेइंग 450 फॉर द chia seeds that are marketed by Natural Foods because we expect it to be of a better quality. better quality मिसाल के तौर पे ज़्यादा साफ सुथरा होगा, ज़्यादा पैकेजिंग उसकी अच्छी होगी, उसकी शेल्फ लाइफ होगी, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको पैक किया होगा, एक्सपायरी डेट उसकी लिखी हुई होगी, थिंग्स लाइक दैट। तो and the feeling of for example security, if you can see on my screen, that you can see that you can feel by purchasing that packaged natural foods chia seeds, and the feeling of security that you will maybe feel after purchasing that unbranded tukham balanga, that would be different. So we are paying a premium price for the symbolic benefits that go with a branded product, and a customer will only be willing to pay that premium if the customer finds value in that branded product. Otherwise वो unbranded products खरीदने में ज़्यादा comfortable रहेगा, ज़्यादा मुनाफा उसको unbranded product खरीदने में मिलेगा। मैम एक क्वेश्चन पूछ लूं, एक टिप हाँ चाहिए हाँ, थी। प्लीज। अब जब आप ब्रांड में आ गए, आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है, चिया सीड हर कोई बेच रहा है, तो उधर जाके आप क्या करेंगे, डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? उसमें फिर आप, किसने मुझसे कहा था कस्टमर पेन पॉइंट्स? वकास आपने कहा था पेन पॉइंट्स का, मैंने कहा था। आपने कहा था। तो आप ये देखेंगे कि वो हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट योर ब्रांड ऑफ चिया सीड्स फ्रॉम द ऑलरेडी अवेलेबल ब्रांड्स। क्या उसमें शेल्फ लाइफ कोई पेन पॉइंट बना हुआ है कस्टमर के लिए? क्या अवेलेबिलिटी पेन पॉइंट बनी हुई है? क्योंकि हम ज्यादातर ये समझते हैं कि ब्रांड इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट। नो, you create a brand by addressing the pain points in distribution, in communication, in delivery, not just the product itself. So for example, अगर जैसे ये मैंने जो ब्रांड का नाम लिया नेचुरल प्रोडक्ट्स की, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वीक है, बहुत कम स्टोर्स पे ये अवेलेबल है। लेकिन आपकी ब्रांड जो इसकी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड है, इजीली अवेलेबल है, तो मेरे लिए तो कन्वीनियंस आपकी ब्रांड खरीदने में हो जाएगी ना। दैट कन्वीनियंस विल हेल्प मी एंड हेल्प यू इन पे व्हेन इट विल मेक मी पे मोर फॉर योर ब्रांड एज कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड। ठीक है, अब देखें ये कितने सारे, अब तो ब्रांडेड एग्स भी आ गए। मुझे याद है जब मैंने 2013 में ब्रांडिंग पढ़ानी शुरू की थी, तो मैं एग्जांपल दिया करती थी अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स में एग्स का, लेकिन अब तो एग्स भी ब्रांडेड मिल रहे हैं। एंड हाउ आर यू एबल टू डिफरेंशिएट द ब्रांड, वन ब्रांडेड brand of X from another brand of X? It's just symbolic difference that marketeers are successfully creating in the minds of the consumers. Okay, you have to play around with the perception of the customers. Okay,
And there's nothing unethical or wrong or illegitimate over it, because marketing has its own ethics, branding has its own ethics. So you are your success will lie in something that you are able to tell the truth in a beautiful manner. You don't have to build your marketing and branding strategy over false claims. Keep it simple and keep it transparent. Your brand will have an inner strength which will attract customers to you. डिटॉल ने Okay. कहा था ना 99.9% श्योर, 100% श्योर क्यों नहीं कहा उसने? क्योंकि उसको पता था 100% श्योर जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा ट्रुथफुलनेस का इस ब्रांड के बारे में जितना 99.9% श्योर क्रिएट करेगा. ठीक है? जी मैम. Okay, just let me show you some very interesting examples of some successful and out of the box marketing strategies that helped in really building strong brands. Let me skip a few things over here. Let me show you the interesting examples first. Yes. क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? बेंच. खाली बेंच नजर आ रहा है. किट कैट का बेंच जो ब्रांडेड है. किट कैट का chocolate? बेंच. बेंच को देख के a person would definitely want to have Yes. Kit Kat in the first available. और अगर ये बेंच जो है ये किसी जॉगिंग ट्रैक पे रखा हुआ है ना, तो जितनी कैलोरीज जॉगिंग से लूज की होंगी ना वो किट कैट वापस दिलवा देगा. ऐसे ही 2 है के ना? मल्टीपल में. ठीक है. ओके, व्हाट कैन यू सी नाउ? पंच. स्पंज. इज इट अ स्पंज? Scotch Brite. स्कॉच ब्राइट कहाँ लगा हुआ है? मुझे नहीं पता पिक्चर कितनी क्लियर आपको नजर आ रही है. ये ड्रिंकिंग फाउंटेन्स जो होते हैं ना एयरपोर्ट्स वगैरह पे, या जैसे हम लोगों की यूनिवर्सिटीज में या ऑफिसेस में लगे होते हैं, दिस इज अ ड्रिंकिंग फाउंटेन. और ये एक रोड साइड पे लगा हुआ है और इसने ये प्रोडक्ट इन यूज दिखाया हुआ है, यानी ड्रिंकिंग फाउंटेन की बेस पे उसने स्कॉच ब्राइट का स्पंज लगा दिया है ताकि वो सारी स्पिलेज को एब्जॉर्ब करके कस्टमर को बताए कि हाउ इफेक्टिव द स्पंज of Scotch Brite is. This is actually again a very innovative idea of branding by showing your product in action. What's unfortunately मेरे पास कोई मेरा ख्याल है फीमेल ऑडियंस नहीं है इस वक्त, लेकिन आप लोगों का भी नॉलेज तो इतना होगा कि आप रियलाइज कर सकेंगे कि क्या चीज दिखाई जा रही है. ये वॉक थ्रू गेट है और उसको उसने लॉन्ग लैशेस से उसको रिलेट किया हुआ कि उतनी लंबी लंबी जितना ये है ये. ठीक है, राइट. तो अब ये बताते हैं हम कि जो ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए दिखाई कि ये आप जहन में रखें. और अब हम पीछे चलते हैं कि हमारा जो ब्रांडिंग पिरामिड था और ब्रांडिंग स्ट्रेटजी जो है उसमें हम साइनर्जी कैसे क्रिएट कर रहे हैं. तो हाउ वेल डज अ प्रपोज्ड एड कैंपेन कंट्रीब्यूट टू ब्रांड अवेयरनेस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्रांड पिरामिड की बेस बिल्डअप करता है जिसमें आपकी सेलियंस, आपकी अवेयरनेस ब्रांड की बिल्ड हो रही होती है. देन इज द कैंपेन क्रिएटिंग, मेंटेनिंग और स्ट्रेंथनिंग सर्टेन ब्रांड एसोसिएशंस व्हिच मींस पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड इज इट लीडिंग टुवर्ड्स फेवरेबल ब्रांड जजमेंट्स एंड फीलिंग्स. जब आप इस स्टेज पर इस ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे होते हैं मार्केटिंग, तो ये आपके सेकंड और थर्ड लेवल ऑफ ब्रांड पिरामिड को अफेक्ट कर रहा होता है. एंड व्हेन योर marketing and branding objective is that you have to encourage customers to enter into a long-term profitable relationship with you for which they might be willing to pay a premium price, then you are actually leading towards intensive active loyalty of the brand itself. ठीक है. अब ये कहानी जो थी ये तो एक ब्रांड के हवाले से थी, लेकिन हम जरूरी तो नहीं है कि हमारा पूरा बिजनेस जो है वो एक ब्रांड पर हो. सो ब्रांडिंग ऑफ वन प्रोडक्ट इवेंचुअली लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ
ब्रांड प्रोडक्ट मैट्रिक्स। इस टेबल को बहुत सिंपल है समझना, कॉलम्स में डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज दी हुई हैं और रोज में डिफरेंट ब्रांड्स दी हुई हैं which extend over across these brands। ठीक है इसका एग्जांपल मैं आपको यूनिलीवर की मैट्रिक्स से दिखाती हूँ। Unilever has shampoo category, it has soap category, it has conditioner category, detergent, फेस वॉश, क्रीम, बॉडी वॉश, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ब्रांड्स क्या हैं? जो पहली ब्रांड है डव, उसके शैम्पूज भी आते हैं। इट डव has a soap also, it has a face wash also, Dove is a skin cream, moisturizing cream also, it has a body lotion also, and Dove is in the deodorant category also. So the columns are showing you the different categories under which the Dove has extended. Unilever has extended its Dove brand into the shampoo, into the soap, into the conditioner, into the face wash, cream, and so on and so forth। ठीक है, जबकि अगर हम सर्फ एक्सेल को देखें तो it is present only in the detergent category and no other। And why now? Since I hope you have understood about the symbolic benefits, about the image, you can answer me that why isn't Surf Excel extended itself into the shampoo category? बड़ा अहमकाना सवाल लगेगा ना मेरा, but you answer me as an audience of this branding framework that what stops Unilever from extending its Surf Excel brand from detergent into a shampoo category? टारगेट ऑडियंस डिफरेंट हो जाएगी, निश डिफरेंट हो जाएगी, तो वो एक ही को लेके जाना चाह रहे हैं। They have ठीक है, developed a different brand image, starting different brand from image। washing things out and getting things cleaned. बिल्कुल बिल्कुल। और सर्फ एक्सेल इज सच अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड कि उसको कस्टमर परसेप्शन जो है वो डिटर्जेंट के अलावा किसी और प्रोडक्ट कैटेगरी में एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। फेलियर होगा अगर वो सर्फ के नाम से शैम्पू लेकर आएगा या सोप लेकर आएगा। या इसी स्किन केयर में तरह जाएगा? सर्फ एक्सेल स्किन केयर में जा सकता है? नहीं जाएगा ना, ये कह रहा हूँ, या नहीं स्किन केयर में जाएगा, आएगा तो फ्लॉप नहीं हो जाएगा। नहीं जाएगा। लेकिन ये तो लेकिन पैंटीन भी जो है वो डव की पैंटीन जो है वो शैम्पू है और डव भी शैम्पू है। स्टिल डव हैज अ वेरी डिफरेंट टारगेट ऑडियंस customer segment, and Pantene has a totally different targeted customer segment। यानी Unilever की अपने ही दो brands हैं shampoos की, but it is able to gain a larger share of the total market by directing two different brands at two different customer segments। ठीक है जी मैम, एक क्वेश्चन है मेरा, जी क्वेश्चन जी। है। अब डव और पेंटीन जो है दोनों शैम्पू बना रहे हैं, तो बेसिकली डव की तो वो एक पर्सपेक्टिव या उनकी एक परसेप्शन ऐसे है कि वो एक स्किन केयर ब्रांड में है, और जो पेंटीन है वो सिर्फ हेयर केयर से रिलेटेड है। तो ये क्या सिर्फ मार्केटिंग ही ऐसा पॉइंट है जो इन चीजों को उस तरह दोनों को डिफरेंशिएट करता है कस्टमर के जहन में? मार्केटिंग ही बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, लेकिन आपके सवाल को मैं इस तरह से भी समझी हूँ, आई डोंट नो कि मैंने आपका सवाल सही समझा या नहीं, कि डव और पैंटीन दोनों शैम्पू कैटेगरी में हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी भी कोई कंपनी है और मैं भी फर्दर उसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, तो किन पॉइंट्स को रख कर मैं उन दोनों को अलग कर सकूंगा? ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या होंगे? अगर आपने सॉक्स लॉन्च किए हैं ना, तो ठीक है, रिलेटेड कैटेगरी क्या हो सकती है अच्छा सॉक्स ठीक के है, साथ? एक ऑफिस के लिए रख लेंगे, एक स्पोर्ट्स के लिए रख लेंगे, इस तरह कर नहीं लेंगे। सॉक्स के अलावा क्या कैटेगरी हो सकती है? सपोज कि आपने सॉक्स की ब्रांड लॉन्च की, बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत उसकी ब्रांड सेलियंस और ब्रांड मीनिंग और ब्रांड इमेजरी, ब्रांड रिस्पॉन्स, लॉयल्टी सब बहुत अच्छी आई है। You have created an excellent brand. Now you want to extend that brand further. What product categories can you think of? Gloves or caps. पॉलिश Gloves or शूज। caps?
Maybe shoes and polish. Stockings. Stockings, okay. Insoles, Insoles. ठीक है. और maybe you अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहें तो जो स्पोर्ट्स केयर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल्स, सिंपली जो आजकल हर कोई बेटर हाइड्रेशन के लिए कैरी कर रहा होता है, मे बी यूड लाइक टू गो ओवर देयर, Knee right? guards. Knee guards. Any product category which you would not like to go into? Skincare. Why? Because that involves application and touching your skin, अच्छा whereas मेरे this is मेरे the things to wear. अच्छा मेरे जहन में एक और ये बहुत ही वाइल्ड एग्जांपल था. अगर सॉक्स की कैटेगरी में कोई ब्रांड बहुत सक्सेसफुल है तो वो कन्फेक्शनरी नहीं लॉन्च करेगी, च्युइंगम, बबल गम, हार्ड बॉइल्ड कैंडीज नहीं जी. लॉन्च करेगी. क्यों? इसलिए कि socks have been launched with the perception of providing very good care to the customers, keeping them warm, providing them comfort. जबकि आपकी कन्फेक्शनरी जो है उससे थोड़ा सा प्रोडक्ट विजन जो है वो इतना मेच्योर, इतना केयरिंग नहीं आता जितना कि सॉक्स की कैटेगरी से आता है. तो जहाँ पे आपका ब्रांड विजन एक दूसरे से क्या कहना चाहिए, एक दूसरे को Conflict. हर्ट कर रहा होगा, you will not be extending that brand in that category, right? जी. ठीक है. Okay, if you allow me, let me introduce myself to you because I wanted my introduction to be kept till the very last. Can I have 2 minutes? I am very grateful to the platform that Aspire provided to me for delivering this highly interactive lecture or session to you. I enjoyed it very much and I hope you enjoyed it equally. Um, you already know my name. I am Fariha Raza, and I did my MBA from IPA in 1994. And then I joined the corporate world. I was with Hilal Confectionery for 8 years, and I rose to the position of general manager of business administration over there. After Hilal, I joined Diwan Farooq Motors, and over there I was the head of marketing. I was looking after Hyundai and Kia brands. And later on, my product portfolio was extended to include Mitsubishi also. And I was the liaison person between the parent assemblers, that is the Hyundai Motor Corporation and Kia Motor Company and Mitsubishi Motor Corporation and Diwan Farooq Motors and Diwan Mushtaq Motor Company. I remained with them for 6 years and then I moved towards academia. So I did my MS and I also enrolled in PhD. I need your prayers so that I soon finish my PhD. My final defense is awaited. So hopefully with your prayers, Inshallah. that defense will be arranged soon. Inshallah, prayers for you. A lot of prayers for you. Thank you very much. And ma'am, can you share your social media platforms where we can connect to you or things like this? Anything like that? Yes, you can just aspire. Do we have any? Am I allowed to do so? Actually, I am in front of you from Aspire's platform and they have your database. So I don't mind sharing, but if Aspire allows, then my contact details will be shared with the participants. Okay, yes, we would like to have them so that we can get any kind of assistance if you are available or can give us, then that would be helpful for us actually. I would be greatly honored. मैम आपका इंट्रोडक्शन सुना, बहुत अच्छा लगा. दूसरा ये कि मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ आपसे, जैसे आपने अभी एस्पायर से रिक्वेस्ट की है
तो इसी तरह मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंसल्टेंट हूँ, जो मैं मतलब पाकिस्तान में भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, एज अ ट्रेनर, मतलब स्टूडेंट मेरे, मतलब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं जिनको मैं फ्रीलांसिंग सिखा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो मैं बेसिकली जो मेरा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, जबकि मुझे इतना नहीं पता था कि मेरे पास जो स्किल्स हैं मैं उनको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने 4 मंथ बिफोर फाइवर पे मैंने अपना अकाउंट बनाया है। तो मेरी यूनिकनेस ये थी कि मैं कोर्स डिजाइनर हूँ, मैं कोर्स डिजाइन करके दे रहा हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को फॉरेन में। तो मैंने 2 इंस्टीट्यूट्स को अपने कोर्स डिजाइन करके दिए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपना नाम भी उसमें यूज करूं, क्योंकि मैंने अपनी एक्सेस भी देनी है, लेकिन वहां से मुझे यही रिजेक्शन मिलती है कि आप अपना नाम यूज नहीं कर सकते कहीं भी, किसी भी स्लाइड में आप अपना नाम या फिर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते अपनी। तो इससे मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कैसे अवेयर करें कि जो इंस्टीट्यूट हमारा कोर्स पढ़ा रहा है, तो दूसरा अगर कोई स्टूडेंट है वो हमारे से कंसल्टेंसी लेना चाहता है, या कोई और इंस्टीट्यूट उस कंट्री से हमें कंसल्टेंट में रखना चाहता है, तो कैसे हम उस तक पहुंचे। तो मेरा क्वेश्चन ये था। फरहान, इसके देखिए अभी मेरी जो स्टेज है, मैं ब्रांडिंग स्टेज तक तो मैं जा नहीं सकता, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं एडवर्टाइजमेंट ऐसे कि मैं सोशल मीडिया पे करता हूँ। तो मुझे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से जो है ना ज्वाइन करते हैं। पहला मैंने सेशन फ्री ट्रेन किया है, तो उसी जो फ्री ट्रेन मेरा स्टाफ था, मतलब जिन स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दी है, उन्होंने मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडवर्टाइज किया है। तो वेरी उसी से गुड। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड बैच में क्लियर करवा चुका हूँ, और 30 स्टूडेंट्स मेरे अंडर फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो कोर्स मिलता है मैं खुद भी उसके ऊपर काम करता हूँ, और जो मेरे ट्रेन स्टूडेंट होते हैं उनको भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, और उसमें शेयर में अपना रखता हूँ सारा। तो मैं चाहता हूँ कि इस अवेयरनेस को मैं पाकिस्तान लेवल पे ऐसे लेकर आ सकता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को, जैसे मैं एक बैच बनाता हूँ और मैं ऑफिस में जाता हूँ, उनसे कंसल्टेंसी लेता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल आप एक सर्टिफिकेट डिजाइन कर रही हैं, आपके पास जो डाटा है वो 50 एम्प्लॉयज का डाटा है आपके पास, या फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज हैं आपके पास। तो एक वर्क आप 1 आवर में कंप्लीट कर रही हैं, और मैं जो है ना इतना ट्रेंड हूँ कि मैं वही काम 10 मिनट में उनको करके दे सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके स्टाफ को ट्रेन करूँ। तो मैं ये चीज अवेयरनेस लेके आना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में, कि एम्प्लॉयज हैं, आपको पता है आवाम जो है 1 घंटे का काम जो होता है वो पूरे दिन में करके देती है अपने फरहान, हमने बॉस को। जैसे अभी देखा था ना कि एवरीथिंग कैन बी ब्रांडेड, यू नीड टू डेवलप यस, योरसेल्फ एज अ वेरी यस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड। और अभी तक यस, जो आपके एफर्ट्स हैं, आप उसको असेस करें कि वेयर हैव बीन द वीक पॉइंट्स, व्हाट वर दे बिकॉज ऑफ, यस, was your were you marketing yourself adequately, were you marketing yourself to the right audience, or were you having a shotgun approach के जो मिल गया जिसको मिल गया आपने उसको टारगेट करना है? The more यस, precise your approach is, the more successful you would be, although it will be more time taking, but it will develop your identity as a professional in your field, and that identity is highly is very necessary, it is imperative, because without that identity, your professionalism will not be, um, I mean, you will not be able to make others use of your professionalism. So you have to build यस yourself as a very strong brand, and then मैम। you have to जी, approach them through specific targeting strategy. ओके मैम, जो पहला इशू आया था मुझे पहले I'm बैच में sorry, ये था कि फरहान, जी, आई एम सॉरी, मैं आपको पता है ना, आपको मेरे बैकग्राउंड से लग रहा होगा कि मैं यूनिवर्सिटी से आपका सेशन कंडक्ट कर जी, रही जी, थी. So जी, I'm आई running short अंडरस्टैंड। of time because I have a regular class now, and ओके, you can request Aspire to share my contact details for you, and you can address your personal queries later on. ओके, ठीक थैंक है, यू। thank you so much, all of you. Fazli Muqim sir, personal thanks to you for providing me this platform. I really enjoyed being with this enthusiastic group of young people. And always I say learning is an interactive exercise. I don't know how much they would carry forward from here, but yes, their points, their observations, their very simple comments were
an amazing addition to my own knowledge. Thank you so much. Thank you so Okay. much. Thank you. Amen.